So recording is done. Okay. So okay. So I guess any one of you have gone through the code, the syllabus that we have provided or the brochure. How many of you guys have gone through that? Just yes or no will do. Okay. So people would like to interact through chats. Maybe I will have to keep a good eye on chats. Uh, Pramod haven't gone. Himanshu has gone through the. Could you zoom, please? Yes, I can zoom directly as well. So can you guys see now? I guess somebody's watching. My bad. To zoom. Okay. Is it visible now, guys? Guys, let's be more interact. Like I know people. Yeah, like we are not coming from some college or some school, right? We are not. It's Yeah, visible. it's visible. Yeah. So like my idea is like we are not here like small kids, right? Where I have to tell you like turn on your mic to speak something. Okay, just any like even in sessions, if you have a question, just turn on your mic and like you can stop me at any point, no issues. Okay, so okay, so these are the I'll just quickly walk you through. Maybe apart from SQL, since more of you people are interested in Power BI, so I'll just quickly walk you through the like what are the things that we'll be covering in Power BI. So basically, we'll just have a quick introduction, benefits, and all those things. And learning from Power BI tool perspective we'll start with BI desktop, and like from zero, like loading data, cleaning the data, and creating dashboards and best practices of the dashboard. How do we what are the things that are being followed in industries? So we'll cover those things, and after that we'll learn about the Power BI services, uh, and how do you share your reports, or what are the security things that you can do on your side as a developer. We'll be learning all those things. So like those things are given, like all those points are given here in the details. One of the most keywords that is being searched on internet, DAX. So basically DAX will also be having a good look on the DAX. Like we'll be learning in detail what is DAX, what it is used. So like if you just want to know what is DAX, it is simply just some kind of formula, if you're aware with the Excel, or maybe just some calculation points of thing that are available in the DAX. Like I'm putting this in a very lame word, but then this is what it is, I would say. Going down the line, we'll also see data visualization, as we said, like what are the tools, or what are the charts available, which chart is used for which purpose, and what are the best practices, what are the best color combinations that you do, what are the minute details that that is to be noted while presenting a chart to the higher managements. Okay, so all those things will be covered in the Power BI, and once we are done that, we'll move to the Power BI services. So like services is mostly like cloud integration, and you can say with limited functionalities of Power BI desktop. And before that, so like since Power BI is all about reporting, uh, before that we'll learn about SQL. So SQL क्या होता है, SQL में क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपको SQL कितना आना चाहिए. Because trust me, if anybody want to try tomorrow, apply like from tomorrow itself, start applying for Power BI positions, and apart from Power BI, they will definitely ask you lots of question about SQL as well. So like since this in this class, most of the people are looking for like more from the job switch perspective. We'll try to keep our keep our syllabus or this training from the job orientation, like from job perspective, and learning also from as a industrial oriented practice. Okay, so this is a quick thing about Power BI. And now jumping to the SQL. Okay, so basically if I put everything in a nutshell, so this is what you will be learning. Obviously I'm scrolling it too fast, but then there are different types of, what are the different types of language available in SQL, what is SQL, what is database, how do we what is the difference between normal database and NoSQL, what are the different kinds of statements that are used in the inside SQL. Those things we'll be covering. And so like ideally there are 5 types of SQL, like we'll be learning all those things, but then we'll be covering we'll be focusing more on data pullings one that are called as queries. So like because the reason being,
as an analyst, you won't be handling databases, like that is a part of DBA, that is database administration. So you won't be going into that. All you have to do, you will get the data, you will have to pull it as per your convenience. So that's why we won't be going deep into other parts. We'll just focus on more focus on data query part. Mhm. uh, Somebody turn on the mic, like any queries? Hello? Okay, so at this point, like I think I have like walked you through a lot of just an very quick overview of the things. So at this point, anybody has any questions? At least at this point. So today's session, it will be just like more like understanding about this course. चार्जेबल है सर कोर्स? क्या क्या? कोर्स चार्जेबल है? इसमें फी देना होगा कुछ का? कुछ चार्जेबल? अच्छा, मतलब ये 100% फ्री है क्या ये पूरा कोर्स? मतलब ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो, कि आप जो यूज करने वाले वो चीजें? जो आप पढ़ाने वाले हैं? नहीं यार, पढ़ाने का तो पैसा लिया जाएगा। हाँ वही ना, कितना लेंगे? तो उसके बारे में पहले बात करना चाहिए, कितना पैसा लगे। ये तो आप लोग को जब लाइक कॉल वॉल आए होंगे तभी आपसे क्लियर हो गया ना। मैं कॉल ले आया था तो तुरंत आया, देखे तो लिंक पे तभी लगा हूँ, देख क्या है। ओके ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, सो लाइक अभी तक मैंने जितना बताया उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? हेलो हाँ बोलिए। सर, विनीत शर्मा। विनीत बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बोलिए। सर, जो आपने अभी बताया है इसमें, ये आपने डेक्स का फंक्शन, डेक्स में तो सर 7 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं ना? हाँ, मैंने जो भी दिखाया, आप इसकी बात कर रहे हो राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, जो आप लोगों के चैट। हाँ हाँ, होता है ना? आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिए। सर कह रहा हूँ कि 7 टाइप्स के होते हैं ना डेटा टाइप, हाँ हाँ, टाइप के। तो क्वेश्चन क्या है? डेक्स में बोल रहा हूँ सर मैं, मीजर होता है हमारा, कैलकुलेटेड कॉलम होता है, डेट हाँ टाइम होता है, फंक्शन होता है। हाँ हाँ, तो हम वो सब कवर करेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। ठीक है सर। ठीक है ना? मतलब मैं समझ गया, आप ऐसा पूछोगे सर डेक्स में हम लोग डिटेल में सारे फॉर्मूलाज वगैरह या फिर सारे टाइप के डेटा फंक्शंस कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? हाँ हाँ। सर उसका वो हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको लाइक ये भी बताऊंगा कि उन सबको लाइक घुमा फिरा के कैसे यूज किया जाता है। जैसे टेक्स्ट फंक्शन है, उसमें मोस्टली आप टेक्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज यूज नहीं करते हो इंडस्ट्री में, उसको काफी घुमा फिरा के यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो सब जैसे आपके आपके एक कॉलम में सिंगल लाइक डायरेक्टली फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम एक ही साथ दिया हुआ है, तो उसको सेपरेट कैसे करना है, या फिर डेट का फॉर्मेट गलत है, या फिर डेट एज अ स्ट्रिंग आ गई तो आप क्या कैसे हैंडल करोगे उसको, तो वो सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ओके ओके, और कोई क्वेरी किसी को, एटलीस्ट अभी तक हमने जितना देखा उसमें? ओके, सो लाइक मुझे ये भी बता दो, लाइक मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? लाइक या फिर बहुत ज्यादा स्लो जा रहा हूँ? स्लो तो नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा फास्ट था। हाँ थोड़ा फास्ट है, लाइक टेंशन मतलब गाइस, हम लोग जब लाइक व्हेन विल स्टार्ट actually learning the concepts, will be going in deep and will be going very slow. Okay, so like maybe आप लोगों का 2 घंटे का लेक्चर शायद 2.5 घंटा चला जाए, so be prepared for that as well. Okay, and yes, and now coming to the point, ये सब सीखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, राइट? अभी आप बोल रहे हो कि आप लोग, आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर विद एक्सेल। Sorry to interrupt. So in this session, you are just going to give us the brief introduction about the Power BI and the SQL, or you are going to teach something? No, like I'll be just going you brief, like I'll be just briefing about the things, like about the course and the content of the course and how I'll be teaching the things Okay. and what are the tools that you will need. So I guess you guys are like trying to see how I'll be teaching, right? Yeah. Actually, we want a demo lecture, somewhat kind of demo lecture, so that we will get an idea about how
it will be beneficial for us. Yeah. So that's why that, like right now, So the introduction will be not helpful for us. yeah, I think. that's okay. So you I guess the like management would have taught that like you will be having not just single demo lecture. You guys will be having I guess at least 2 or 3 demo lectures. So that will be free or it will be No, costly? like demo lectures will be free. Okay. Okay. What's yeah? Hello. Yes, I Ramesh. think it's same like that. If you show that what is the end of the day, what is the which reports like we can be able to prepare like that also you just show at the end of the demo. It will be also beneficial for us. Because this course content I understand, but Mhm. how we are going to at the end of the last month, at the end of the course, what So we can so do, what so to so so maybe if I'm getting your question right, you are saying at like at the end of the course, what we'll be capable of, right? correct, Right, Ramesh? correct, correct. Correct. So okay, so from capable like from your skill set, I can guarantee you that once the course is complete, you guys can start applying for the Power BI jobs. Okay, so I'm not saying you will get the very first job offer converted, but then I can make sure you that like once you are down through 2 or 3 interviews, definitely you are going to get the job. I'll assure you that. And even after completion of the course, if you guys have any queries, if you guys want to have any discussion for the interviews, for your interviews, then also I'll be there for that as well. Okay. 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 And okay, any other questions at this point? So like this like treat this particular session as more like a Q&A before we start before we jump into the actual sessions. Because like even if I go with lot of lot of demo and lot of concept, uh, I guess before we start the lectures, we should be clear, right, what we are going for, like we are spending at least 1.5 months of our life, right? So it should be meaningful. Okay, so Sorry. So in the 1.5 months, you will be completing an advance of Power BI and the SQL, both the things. no, SQL I won't be taking advanced. SQL I'll be teaching you advanced enough from the query perspective. There are a lot of things in the So in SQL. the simple thing, it will be a basic, right? No, trust like so when you say advanced, I'll be covering advanced queries, not the like advanced like in database. There are lots of things that can be done. From simple writing a simple select query to like granting permissions, managing databases, managing servers. So we won't be going into that part. As a business analyst, whatever you need to know, I'll make sure that you can whenever you sit in front of an interviewer, you are able to answer each and every question with confidence. Hmm. So at that level, I would say. And what about Power BI? That will be a basic or an advanced? Same goes for Power BI. I understand like people are coming from working background, so I know what is the expectation. So like maybe I forgot to tell you, but I myself take the interviews for the candidates, so I know what is the market expectation. So I don't take just for Power BI. I also like if you guys can search on, maybe I'll just show you. There are other tools as well. If I can just show you like Tipco Spotfire. Okay, so if you guys can see, I take training for this tool as well. Hmm. Okay, so like this is even when it comes to analytics power, this tool is even more advanced. Okay, so I take for this as well. I used to take for Tableau as well, but then right now Tableau is not well performing in market. So like I'm leaving slowly Tableau, I would say. Okay. So it will be a placement assistant. After Uh, completing our course, we will get a placements. like I'll be very clear with you. I'll tell you about the opportunities where you guys can apply. Applying is your job. I can help you with your resume. I can help you with preparation for the interviews. I can help you with even up to HR round. Okay, what if there is any more expectation from your side, let me know.
Like, are you guys expecting anything else in terms of placement? Yeah, what we are expecting, what I am personally expecting is that if you are giving us a placement assistant is just grooming, right? But placement is somewhat like if you have any tie up with a company, Mhm. that you will give our resume to that company, that the company is hiring for Power BI Okay. or a Tableau developer. So So that, that will be a great for any candidate. so So that's what I mentioned, right, in the start itself. I'll give you the opportunities. I'll tell you about the opportunities. Okay, your job is to like, if you can apply directly. Like, obviously I don't have tie with all the companies, right? There are 5 to 6 companies. I have tie with Tipco. I have tie with Capgemini, like personal connections with HR from different companies. I have tie from BCTs. I have tie from TCS. I have tie from not Wipro, Capgemini. So I can forward your resume to these companies, and like down the line, I can, if I get more network, I will definitely pass your resume to there as well. actually, why I asked this question, the thing is that in the current scenario, the companies are asking for an experienced person. They are not looking for a fresher one. If we have completed this course, even though we have completed this course, we will not get the job as a fresher. Okay. Yes. Yeah. Yes, So I, that's the reason I have asked you that do you have any tie-up with the companies that they will take us as a fresher? Then only we will get an Yeah. experience and we can come forward for it. okay. Yes. So Every company need experienced person, not a fresher. okay. So If let me. you, if you have a good relation with company, and then you will consider the fresher. No, 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 no. I get your point. Yeah. So let me just reframe the question. You are saying, can I make you can I like give you a road to the interview room, right? Mm. That's the question exactly, right? And what if in the interest, like when you go for the interview, what if they ask for the experience? Exactly, that's the question, right? No, 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 no. My question was after Guaranteed completing placement this or not? course, as per my market research, my past research, the thing is that the company is asking for a experienced Power BI, hand-on experience of Power BI. Yes, No, I understand. they will not consider fresher. The companies are not looking for a fresher candidate. They are looking for an experienced candidate. So Okay. if you have a tie-up with the companies that are looking for a fresher, they will appoint as a fresher. So that will be a great for us, right? Okay. Then only it will be beneficial. So anybody can like anybody, not just you, can anybody tell me what do you mean by experience? Like what if you were to hire somebody, how would you check if the person is experienced or not? The person should be a hand-on experience. He should be a knowledgeable. So how do Well, you know that? from my perspective, see, if you are working in an MIS operations or a business analyst, okay, this tool will help us to get the more opportunities. It doesn't mean that you are experienced in Power BI and they are looking particularly Power BI developer. No, it is not like that. This tool will help us to get a better opportunity, what you are getting it right now. This is Venkat, what my understanding. Now, Himanshu, or I don't know the lady, I'm sorry to say that. Okay. Yeah, Himanshu, sorry. See, this tool is like, you are, whatever he's saying is that, he will help you to get you some of the interviews, not all the way, not all the way, maybe whatever he has, he can do it, he will do it. But this tool will help us to get a better opportunity. That is what Oh, my, yes. yes. Okay. So let me answer that question. Okay, now. So first of all, yeah, as I was saying, like, let me know what do you mean by experience, and what do you expect when you say like I want a 3-year experience guy? Can anybody answer this? Like, you guys have been working for like at least 3 to 5 years, right? So my question is, what comes to your mind when you ask experience? Like, I'm also like from recruitment team, so I'm just questioning those things. What is the mindset of a recruiter, I'm saying? Can anybody answer me?
Like even if you don't have answer, let me know. Like I'll go with the answer as well. As per my experience, I can say that the experienced person, they must have a hand-on experience. They must have a good knowledge about the tool. Knowledge about the tool, right? They just want they don't want just a certification from a candidate. They want a hand-on experience. Okay, so you are saying if That you I were can. to hire somebody, you will not just check for the certificate, you will check his knowledge, right? Yeah. Basically you will be checking the knowledge, not whether, not the number of days that he had worked for the companies, but what he has actually done, right? Hello. Correct. Yes. Somebody else is trying to speak. Hello. Yeah. Yes. Hello. Yes, we can hear you. Hello. Yes, we can hear you. हम आपको सुन सकते हैं. कौन बोल रहा है? Okay, so just in case, okay, Rosh, just a query on the chat. I am a fresher, तब तो मेरा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसी बात नहीं है. Fresher के लिए भी बहुत सारी opening है. Okay, I'll just show you on the naukri.com itself. Simple. So okay, now coming point to the people who are saying sir मेरा 4-5 साल का experience है, and अगर मैं Power BI में switch करूंगा तो क्या वो मेरा as experience count होगा क्या, right? एंड या फिर अगर मैं फ्रेशर हूँ जहाँ, तो ऑब्वियसली देखो, अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो यार आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड द पीपल हु आर राइट नाउ वर्किंग एंड आर सेइंग दैट will my experience count, so there is a way to make that experience count. Okay, there is I would say after completion of this particular course, if you are able to grind for another 1 month, okay, I'll be there. If you want, I'll be there to help you out, okay, with that grind. I'll give you lots of use cases. I'll give you lots of more projects apart from what we'll be covering in this particular course. I will give you lots of industrial experience as well. So trust me, right now the position that I am working with, I switched my job when I had the experience of 4 years. I have applied for a job which requires experience of 8 years, and right now I'm in a position where people with experience of 8 to 9 years 9 years sit. I'm right now I'm leading my project. If you guys are I don't know how many of you guys have been in IT industry, but if you know the project managers or the people who lead the project must have a minimum experience of 7 to 8 years. Okay, now coming to the point, sir, how will my experience count? It depends upon what you know and how you understand the things from industry perspective. In industry, you just don't have experience on the tool, you have the experience of understanding, you have the experience of interacting with the customers, you have the experience of communication, right, handling the situation. All these things count inside the experience. Okay, now next question is, sir, that thing is fine, right? Obviously, चलो ठीक है सर, आप बोलने के लिए बोल रहे हो, but what about this technical skill, right? इस tool पे हमें काम करना है, right? So the answer to that will be, I'll make sure कि तुम्हारा जो टेक्निकल स्किल है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि तुम बैठ के आराम से एक्सपीरियंस्ड वाले इंटरव्यू भी क्लियर कर सको. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट रैंडमली. आई हैड मेड फ्रेशर्स क्लियर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट व्हिच रिक्वायर एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years. हेलो. यस. हेलो. यस. तो मेरा एक क्वेश्चन है. तो जैसा आप सर्विस कराओगे, हेलो, पावर बीआई सर्विस, इसमें सर आप इसमें टीम कोलैबोरेशन होता है, एक टॉपिक, और हमारा ये डेटा सेट होता है, डेटा सोर्स होता है. हाँ. और सर काफ़ी सारे टॉपिक, गेटवे होता है हमारा. या इसमें देखो मैं बताता हूँ. अब मैं देखो, हम ना डेवलपमेंट वाला पार्ट, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या होने वाला है. हम डेवलपमेंट वाला पार्ट एकदम अच्छे से, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी हम सीखेंगे, वो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लियरली सीख लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर लेंगे. पावर बीआई सर्विस क्या है? पावर बीआई सर्विस इज मोर लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म. अगर आप लोगों को पता हो तो सैज होता है, सैज बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, हाँ, मतलब सॉफ्ट क्लाउड बेस्ड है बेसिकली. तो वो क्या करता है कि आपका जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वो आपके कंप्यूटर पे बैठता है, और जो आपका पावर बीआई सर्विस है वो बेसिकली कंप्यूटर से कुछ चीजें उठा के उसमें से कुछ चीजें हटा.
नहीं देखो, मैं लेट मी फिनिश। कंप्यूटर का जो आपके पास एप्लीकेशन रहेगा उसको उठा के आपने इंटरनेट पे रख दिया, उसमें से कुछ फंक्शनैलिटी कट कर दी और कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी डाल दी जिससे कि बाकी लोग भी उस रिपोर्ट को यूज कर पाए। नटशेल में ये है आपका पावर बीआई सर्विस। ठीक है, अब आता है कि पावर बीआई सर्विस में हम क्या सीखेंगे ना। तो पावर बीआई सर्विस में हमने एक बार डैशबोर्ड क्रिएशन हमने डेस्कटॉप पे देख लिया। उसके बाद वी विल लर्न कि हाँ भाई उसको शेयर कैसे करते हैं, उसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। तो ये सब चीजें हम मेन चीज पावर बीआई में सीखे, पावर सॉरी बीआई सर्विसेज में सीखेंगे। और डेटा मॉडलिंग भी कराओगे ना सर? डेटा मॉडलिंग कैसे साथ होता है पावर तो बीआई? तो देखो, डेटा मॉडलिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं और पावर बीआई सर्विसेज में डेटा मॉडलिंग नहीं होता है। और पाइवोट में कह रहा हूँ सर, मैं डेक्स के साथ। हाँ, डेक्स वगैरह तो हम, मैं बोल रहा हूँ ना, डेक्स वगैरह तो हम एकदम डिटेल में कवर करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैं अभी यहाँ पे जो कंपनी में काम कर रहा हूँ ASP.NET पे कर रहा हूँ। .NET पे काम कर रहे हो? ओके। 1.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर। ठीक है सर, अब मैं यदि मूव करना चाहूँगा पावर बीआई पे .NET सीधा, तो हो जाएगा सर? देखो मैं आपको एकदम फ्रैंकली बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप सामने जाके बोलो कि सर देखो मैंने 1.5 महीने में पावर बीआई सीखा है, तो यार मैं खुद नहीं लूंगा आपको, ठीक है ना। तो कुछ तरीके होते हैं, जब आप इंडस्ट्री को अप्रोच करते हो, ऐसे क्यों बोल रहे थे? जब आप इंडस्ट्री को अप्रोच करते हो तो कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। आप मेरे से लिख लो, मैं बोलता हूँ आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 6 महीना एक टूल को एकदम 100% सीख लो, लेकिन आप सिर्फ टूल के बेसिस पे जाके इंडस्ट्री में अप्लाई करो, आप 10 साल अप्लाई करते रहोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। ठीक है ना। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मेरा जो कोर्स होगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, मे भी आपको शायद टेक्निकल चीजों के टर्म्स में ना कि हाँ भाई पावर बीआई एग्जैक्टली टूल सीखना है आपको, तो मे भी आपको शायद मार्केट में मेरे से अच्छा कोर्स मिल भी जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे इंडस्ट्री रेडी करने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले पूछा लाइक आपके बैच में कितने लोग हैं, किस किस बैकग्राउंड से आते हैं। सो नाउ आई हैव आइडिया कि हाँ भाई मेरे बैच में सब लोग 4-5 साल एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपेक्टेशन ये बन जाता है, लाइक आप मुझे बताओ ना बताओ, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरीके से काउंट होगा आगे, राइट। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ भाई आप पहले बेसिक चीजें सीख जाओ, ठीक है, फिर जब आप थोड़ा सा एडवांस में आओगे, ठीक है, तब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पर्टिकुलर बैकग्राउंड के बेसिस पे हम कुछ किए करें। उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में आप जाओगे तो कैसे जाओगे, उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को लेके आप आगे बढ़ना चाहोगे तो कैसे बढ़ोगे, राइट। मैंने आपको बताया ना कि मेरा बैकग्राउंड, लाइक मैंने एनालिटिक्स में, मैंने फाइनेंस में भी थोड़ा सा काम किया है, राइट नाउ कमर्शियल पे काम कर रहा हूँ मैं, एंड मेडिकल्स में मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, बट देन इफ यू वांट आई कैन रियली लाइक ग्राइंड विथ यू एंड come up with lots of good projects for you as well. मेडिकल का प्रोजेक्ट मिलेगा सर इसमें? मेडिकल का प्रोजेक्ट देखो, मेडिकल के प्रोजेक्ट में कैसा होता है कि उसमें कोविड का तो प्रोजेक्ट मिलेगा ना इसमें? कोविड का तो इसी पे चल रहा है। चलो आपके लिए कोविड का ही बना देंगे फिर, हाँ ठीक है ना। सो सर एक्चुअली सर है ना मेरा सर एक बात यहाँ पर सर, ये देहरादून में रिसर्च सेंटर में सर, वहाँ पर पावर बीआई मांगा है कि जिसका नॉलेज है उसी को बुला रहा है, तो इसलिए सर पावर बीआई हमको सीखना चाह रहे थे। एक्चुअली आई एम कंप्लीटिंग माय बीटेक एंड परस्यूइंग फॉर पीएचडी सर, लेकिन हम जॉब करना चाह रहे थे मैं प्रोजेक्ट में सर, तो इसलिए हमको पावर बीआई सीखना चाह रहे थे। यार देखो, मैं पर्सनल लेवल बताता हूँ, देखो मैनेजमेंट क्या बोलता है, कितने महीने का कोर्स बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। मेरे साथ एक आसाम का बंदा है, वो वहाँ के पैन कार्ड्स का पूरा डेटा हैंडल करता है। वो मेरे को अभी भी रात को कॉल कर देता है कि सर मुझे ये इशू है, आप हेल्प कर सकते हो क्या। मतलब उनको मालूम है कि मैं लाइक 7 o'clock के बाद ही अवेलेबल होता हूँ, और जैसे भी उनको मालूम है अभी मेरा 10 o'clock को, तेरा भी क्या बोलते हैं लाइक 10 o'clock तक कोर्स चलेगा, तो वो मेरे को अब 10 o'clock के बाद कॉल करते हैं कि सर देखो ये इशू है। ऐसी HCL में एक बंदा है, उसको भी कुछ डाउट होता है, वो भी कॉल करता है। तो ऐसा लाइक मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये कोर्स खत्म होने के बाद अब ऐसा मत समझो कि हाँ भाई सर गायब हो जाएंगे या फिर सर दूसरे बैच में गायब हो जाएंगे। आपको डाउट है ना, आप इंडस्ट्री लेवल पे कुछ भी, आप मैं बोलता हूँ आप 4 साल बाद में मेरे को कॉल करो, सर पावर बीआई में मेरे को ये इशू है, विल सिट टुगेदर। आपको एक दिन मेरा कॉल कट नहीं मिलेगा, आप पूछ लो किसी से भी, लाइक मे भी आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, इससे आप बात कर लो कि हाँ भाई ये बंदा है जिससे मैं बात करता हूँ, ठीक है। सो मैं मतलब मैं ये नंबर शो कर दीजिएगा सर। मैं आपको लाइक मैंने काफी लोगों को पर्सनल नंबर से कॉल किया है यार, ओके। सो माय पॉइंट इज कि देखो आप इस कोर्स को, अगर आप, मैं आपको फ्रैंक बोलूंगा, एकदम एकदम सीधा बोलूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 1.5 महीने का कोर्स कर लूंगा और मेरे को जॉब लग जाएगी, कहीं नहीं लगेगा। किसी भी कोर्स में जाओ नहीं लगेगा। मैं बस मेरा कोर्स में सिर्फ इतना फर्क है कि मैं आपको इंडस्ट्री के लाइक क्या चल रहा है अभी, मैं उस पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। एक स्किल हो जाएगा सर, और क्या ऐड ऑन हो जाएगा? स्किल ऐड ऑन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग अच्छा खासा
अच्छा खासा लाइक लोगों को लाइक बाकी लोगों से काफी आगे रहोगे इस चीज में। हाँ ये तो है, प्लस पॉइंट ही रहता है। ठीक है, ये तो महीना में कोई गारंटी थोड़ी देगा सर। ओके सो right, I hope people got like most of their points clear, or like और भी questions है तो like please bring it on this call itself, so that for the next call we will have more kind of learning thing apart from this discussion. रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, जो एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट कंप्लीशन हो जाने के बाद जो सर्टिफिकेट आप दे रहा था, इज इट वैलिड फॉर द इंडस्ट्री, ऐसे पूछा था, क्योंकि सी इट इज नॉट लाइक NIT और समथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट ए ऑर्बिट एनिमेशन और इंस्टीट्यूट इट इज। ये सर्टिफिकेट हमको यूज होगा इन इंडस्ट्री? आप जो एक्सपीरियंस दे रहा है, आप जो इंडस्ट्री वाइज सिखा रहा है, दैट इज वेरी फाइन, आई एग्री विथ यू, बट जैसा कि सी फॉर द कंपनीज लाइक if you are going for some big companies like TCS or something like that, they will be looking for the certificate where it is coming from also. So in that perspective, ये काम होगा? Okay, I'll answer to that. Okay, किसी और का question है certification से related? Like I got one question apart from this. Any other question also regarding? हाँ सर, हाँ वो सर्टिफिकेट, हाँ सर सर्टिफिकेट को शो करना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, देखो सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो इंस्टीट्यूट देता है, और एक होता है जो you get from Microsoft or the product company of the tool. Okay, so none of the institute will provide you certificate issued by Microsoft. Every institute provide the certificate provided by the institute itself, and that is for completion of course. And like that, from that institute certificate perspective, yes, our certificate is valid all over India. Okay, does that answer your questions, or like any more queries? Yes, sir. So you are saying it will be like Microsoft, Microsoft has been certified, something like that, or it is coming from the institute itself? It is coming from institute. Nobody's institute. There is no certificate like powered by Microsoft or sponsored by Microsoft. There are only either there are industry level certificates, or there are product company certificate. Like if right now on my screen you see TIPCO, right? So if you do this certification for Spotfire, so the brand will come from TIPCO Spotfire. Otherwise, if like this certification around, if I'm not wrong, when I gave the certification, it was around 23,000 something. Right now I don't know the cost. Okay, so that is the cost for the that is the cost that you have to pay directly to the product company, not through some organization or any institute. Okay. Okay sir, please continue. Okay. आप स्किल कर दो, इंटरव्यू हम क्लियर कर लेंगे। भाई बात मानो, इंटरव्यू क्लियर करना और स्किल का लेना देना है, बट बहुत ज्यादा नहीं। ओके, आर्ट ऑफ क्लियरिंग एन इंटरव्यू एंड टेक्निकल स्किल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आई कैन लाइक यू हैव टू बी मास्टर इन बोथ, एनीवन विल नॉट डू। अगर आप झूठ बोल के इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आगे जाके आप मुसीबत में पड़ोगे। अगर आपके पास स्किल है, आप इंटरव्यू नहीं कर पागे, तो ऑब्वियसली आपको आगे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। राइट, इस बात से तो सब लोग सहमत करते हो, राइट? Everybody agrees on this, right? Yes, 100%. Okay. So any more questions on this? Like the placement we have covered, or the placement assistant that will be providing. We have covered certification question. Okay. And any other question or any other perspective of the course that you guys want to know? Hello. Yes, Ashish. Yes, this is Ashish calling from Pune. Yes. Currently, I'm working in TCS. Okay. And my profile is PLSQL developer. Okay. So I just want to move my career into Power BI right now. But the thing is that I mentioned in my resume, I am working as a Power BI in last 3 years. But still, I'm not getting a job from the Naukri.com or any other online portal. Maybe we can sit for that and discuss what is, maybe you are not applying in a proper way, or maybe you are not applying through the right way. Do you have a LinkedIn account?
Yes, I have a LinkedIn account. I also share my dashboard with LinkedIn, but still I'm not getting. Dashboard is not incorrect. Maybe we can like, if you want, we can sit for just have a quick view over your profile, and then maybe I can suggest you what are the things that can be improved to get the better opportunity. So trust me, like even now, like now also recently I got like 4 to 5 job offers on my profile. Like not very recently, but within last 3 to 4 months, I have got 4 to 5 job offer like without applying for the jobs. Okay, no problem. Okay, so there are tricks, like not, I won't say tricks, but there are a few things that you need to keep in mind while so we are working. You are working in which industry? So that right now I'm working in IT industry as a business analyst only. So I would more say I'm working as a data analyst. So like down the line, you guys will understand what is the difference between business analyst and data analyst. So right now, properly, I'm working as a data analyst. So this brand that you're seeing, TIPCO, I have been working for this company. Like I was working for this company for last 4 years, and recently I have switched to another company called as BCT. Okay, basically you are from Mumbai, right? Yes, I'm right now staying in Mumbai, and but like my current company is in Pune, but since it is work from home, I'm at Mumbai itself. Okay. I just asking you because I missed the starting session. No worries. It doesn't matter. Like online session, anybody can take it from anywhere. Right? Okay. Thank you for your response. Sure. Okay, so I guess any more questions I would like to like today's session. I'm trying to have as many things clear before we start the session. So I guess sir, please send your number. I'll like, you guys can I would say I will not send it here because I will like to share it with the people who are genuinely interested in the course. So that just in case it is not misused or spammed from somewhere. Okay. So I guess Vinay and Rohit, you guys joined us in the middle of the conversation. So like, do you guys have any queries or? Okay. So if no queries, I'll just give you like I guess most of the people will have a good understanding of what is a business analyst, just in case those people who don't have, and what is the scope of the business analyst. So I'll just quickly take 5 minutes to introduce about that. Okay. Maybe just in case, I'll just scroll through the chats. What's the difference between Power BI and Tableau? Okay, so first of all, let's understand what is Power BI and why do you need to learn this? Okay, I guess obviously people have their own reasons. They want to upgrade their profile, but then Power BI and all those things are tools. Okay, guys, let me know. Just I'm audible, right? Yes. Okay, I'll just somebody's okay. Okay, so okay, so let's understand like about teaching style. Let's go a bit more deeper into how I'll be teaching. Okay, so I guess I gave you an idea like what is my aim to make you guys industrial ready, but like not just teaching you the tool, and how we'll be doing that. So we'll be focusing more on concepts, and obviously we'll be doing hands-on, but then first we'll try to get concept clear. And now the question is like, graph ही तो बनाना है, right? उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक डेटा ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, मे बी कॉलम्स ट्रैक करना है, ड्रॉप करना है, ग्राफ रेडी दैट. सो ऐसा नहीं होता है. सो लाइक हाउ डू वी स्टार्ट द डिजाइन, हाउ डू वी like start from the data, how do we get the requirement from the customer, how do we like clean the data, and what are the things that needs to be kept in mind while cleaning the data, and how do we start building the I would say individual visualization, how do we decide which chart to use. ओके, एंड उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लाइक नॉट जस्ट द विजुअलाइजेशन, लाइक आप रैंडमली कुछ भी डाल सकते. देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड इन इंडस्ट्री. सो ये जो बेस्ट प्रैक्टिस वाली बात कर रहा हूँ, यही आपको सेपरेट करेंगी फ्रेशर और एक्सपीरियंस में. तो लाइक जितना ज्यादा आप इस चीज को रिसर्च करोगे, द मोर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, द मोर you will get an the better you will have an possibility to clear the interview for higher experience also. Okay, and what are the different scenarios apart from the basic functionality, right? Suppose maybe I'm pulling some data, right? So just like what are the different scenarios that can be
added to pulling data. Like maybe the simple scenario would be maybe say there are 3 companies, you have the data for 3 companies, and somebody is looking at the data from the company A. So even though the data is available for all the 3 companies, he should be able to pull the data for only A. And if the same report is being viewed by somebody from people somebody from the company B, how can you limit all those things? So we'll be understanding all those concepts. After that, once we are good with the dashboard, once we are good with the design, the dashboard, will move toward the designing factor. Now the question is, what is the difference between just creating a dashboard and designing? So like the way you how you place the things on the dashboard, which things goes where, maybe what should be the sequence of a dashboard. Trust me, these are all the things that will define you, that will define your experience from the rest of the crowd. Okay, so we will be going into that after that, apart from Power, and then maybe after that we'll be switching to Power BI services, and there we will be learning more of these Power BI tools, sorry, Power BI services features. We won't be doing much of a development of Power BI services because we'll be covering that in the Power BI desktop itself. So on the Power BI services, we'll be just will be more focused on exploring the features that are unique to Power BI services. Before that, before all this happens, we'll definitely have a very good understanding of the SQL. I guess some people, I guess it was somebody was from Vinay, right? From the PLSQL, right? Okay, so like somebody, like few people are from SQL background. So obviously for you guys, maybe first week will be a bit of a boring session, but then we'll be for the rest of the people, we'll be covering basics of SQL, what is SQL, concepts of SQL, concepts like simple queries, select queries, and maybe some queries related to creating tables and databases. And after that, we'll be going deeper into the joins and conditional queries. And after that, maybe some grouping and all those things. And then we'll jump to Power BI. Okay, so this will be the flow of the teaching. And down the line also, will in between, after every session, we will like suppose we have a session of 2 hours. So maybe we'll have a teaching session of maybe 1.5 hours, and then half an hour we'll be having the doubt clearing session in the same meeting. We won't be having we won't wait for nobody should keep their doubts for the next meeting. Like obviously we'll clear the doubts in the next session as well, but try to get those queries cleared in the same session. If you are not understanding, let me know. We are I am good to repeat anything at least 3-4 times, whatever it is required. Okay, but then please make sure you guys are clearing everything before you close the call. Okay, like everybody fine with that? Hello? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Apart from this, if you guys like whatever I'm teaching, I'll try to keep it crisp and more mostly practical. So if I'm teaching you out of 100, I'm just teaching you say 80 things. I'll make sure those 80 things are the one that are actually used in the industry. Okay. So this is how I'll be teaching. Now coming to the session, we'll be having, I would dearly recommend you guys to sit in a quiet place and try to be more interactive. Have your mic turned on as much as possible. Like obviously if there is some background noise, I'll mute it myself, but I won't be muting everybody will have the permission to at any point of time, you guys are free to open your mic and have a conversation. Stop me at any point where you want okay sir, I'm not getting this, maybe can you repeat it? I'll surely do that. Okay, and I guess that's I guess that is good enough, right? So people are from working experience, so I don't expect to be very I don't expect any kind of spoon feeding, right? Like if you guys have doubt, I expect that you will ask on your own, right? Should I expect that from you guys? Yes. Okay, and I'll definitely so since you guys are working, I'll try to keep the
assignments minimum, but then I'll try to make them quality one. Okay, and those who are not working, you guys can ping me separately, and I'll share some lengthy assignments with you guys for so guys, you guys are more involved in this training and hands-on practices. Okay, and the people who are working, don't think that we will not have much to do hands-on. You will definitely have, but I understand that you have some time constraint, so I'll try to keep the assignments very crisp, and try to improve, trying to involve more concept things rather than just hard work kind of thing. Okay, so repetitive things I will try to avoid, but then it is your responsibility to do it with sincerity. And if you guys have any question, feel free to ask, and try to keep in mind whatever you are doing down the course. Okay. Yes. So apart from this, if you guys are expecting anything else, let me know here itself before we start the course. So Ashish, the data source is available for the practice purpose. See, what I believe is I'll definitely share the data source. Okay, there is no doubt in that, because I do have data source. But then if you guys want to introduce your, like, if you like, some people are somebody mentioned, right, you are working from this PLSQL background, right? If you have some data, feel free to put it bring it on. We can work on that, so that people can get a real feel, like how do we start from the data, not just like, because whatever data I have, I'm very much familiar with that. I'll just quickly run through that. Okay, so that will feel more like what to say, predefined kind of task. So I don't want to give you feel of that in my lectures. Okay, so yes, so the question is, do we have data set? The answer is yes. Can we bring your own data set? The answer is also yes. Okay, got the point. And I'll recommend you guys to bring your data. Like, don't bring just one or two tables, bring like 10 or 15 of tables, or maybe some table with around 30-50 columns, or and with some thousands of rows, I would say. So that then you will get the real feel of how this industry work. Okay, and try to bring in data of all kinds, so like from date time, maybe some raw data, maybe where you have all the data in the statement form, and all those kind of things we'll try to cover. Okay. So yeah, so this is what will be. So yeah, apart from that, anybody else expecting anything else, or anybody want me to cover something else? Like, obviously not from syllabus perspective, but then any from teaching style of perspective. Hello. Yes. Yes, sir. Today start topic. So today we won't be covering any topic, as I mentioned. Like, we'll be starting all the topics from tomorrow. So like, those who are here today, please make sure you attend tomorrow's lecture as well. I know like many people are expecting technical session on the first day, but trust me, this is not how I teach. From tomorrow it will be very technical, very straightforward, and very informative. But then today I'm just here to discuss with you guys what are your expectation with the course, and what is my what I am delivering through this course. Ashish. Yes. After completing this course, is there any job assistant from your side? So we will help you out for these things. Okay, so anybody who was there would like to answer to it? Like Ashish, I took that question previously as well, but then just I'm saying, anybody want to answer that, or should I? Okay, so I'll answer it. So Ashish, we won't be providing you like direct job openings. What I mean by that is, I'll definitely let you know about the openings that are available in the market. Okay, and I'll try to, like, if you really work hard, I'll try to get some of your resume directly to the HRs of different companies. I have 5 to 6 companies in my contact, and I have people who are from other companies as well. So maybe I can not directly pass that resume to the HR, but then I can try to get your resume to the HR in person as well.
Okay. Now, second thing is, apart from just passing the resume and telling you about the opportunity, I'll also help you with the resume. If you're experienced, obviously you will have a good understanding of how to creating resume. But then apart from that, if you need some assistance on creating your resume from business analyst perspective and from interview perspective as well, if you want my help, any kind of help, feel free to contact me, and we'll definitely sit together for that. Okay, no problem. Thank you. Yeah. Okay. So anything else, guys? Or maybe right now I do not want to start anything with the teaching, and those who are like looking for कि sir कैसे पढ़ाएंगे, so please कल join करो, and don't miss out कल का lecture. Okay. कल will start from SQL. Sir, please start. Roshan, आज हम start नहीं कर रहे हैं. We are like today's call is just for for this session. So like the training part will be starting from next session, and trust me, it is going to be a bit bit complex. But then I'll try to clear everything on the call itself. Okay. So like yes, like मैं बहुत ज़्यादा देर से बोल रहा हूँ and बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ, I know. But then और कुछ डाउट है तो अभी like है, हम लोग कॉल पे आधे घंटे और 1 घंटे और हैं. So जो भी डाउट है आप आराम से सोच के क्लियर कर लो आज के आज, so that कल से आप like fresh mind से चुपचाप सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलते हैं पूरे फोकस के साथ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे. जॉब का हो गया, सर्टिफिकेट का हो गया, प्लेसमेंट्स के हो गए, असिस्टेंस का हो गया, जॉब का ड्यूरेशन क्या होगा उसकी बात हो गई. सो लाइक जॉब का ड्यूरेशन पे आई गेस किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बट आई विल स्टिल टेल यू. जॉब का ड्यूरेशन बाय डेफिनेशन इट इज अराउंड 1.5 month, बट देन ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी मे बी शायद दैट विल एक्सटेंड अप टू 2 months, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम लोग खत्म करने के चक्कर में कुछ चीजें जल्दी भगा दें या फिर कुछ चीजें छोड़ दें. सो विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स, बट देन इट इज पॉसिबल दैट हाँ यस मतलब कुछ भी छोड़ना मत कर, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए. वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना. सो वी वोंट बी मिसिंग आउट द थिंग्स. It is my responsibility, and apart from, so suppose if I am teaching you something, okay, and कुछ चीजें आपको लगता है सर आपने ये छोड़ दी या फिर मुझे पर्सनल लेवल पे चीज सीखनी है, ओके. सो अगर वो देखो, अब मैं हर चीज की गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि शायद आप कुछ और लेके आ जाओ, सामने वाला बंदा कुछ और लेके आए, ऐसे तो कोर्स आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. सो अगर पॉसिबिलिटी होगी, विल ट्राई टू कवर अप दोज थिंग्स एज वेल. ठीक है. अगर नहीं हुआ, आपको लगता है सर नहीं मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, तो वी विल सेट आउटसाइड दिस कोर्स. मतलब हम आराम से संडे वीकेंड्स पे मे बी दिन में कभी भी बैठ जाएंगे. ओके. हाँ नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये चीज छूट गई है एंड मुझे इस चीज के बारे में जानना ही है, तो विल डेफिनेटली सिट, राइट. जैसे अभी आप बोलो कि सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी आपको लगे सर नहीं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ जानना है, तो ऑब्वियसली हम उस कॉल पे डिस्कस नहीं करेंगे. और आप बोलोगे नहीं सर मुझे जानना ही है किसी भी हाल में, मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो हम बैठ जाएंगे उस चीज के लिए. ठीक है ना. मतलब आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस भी है थोड़े बहुत हैं, तो लाइक अगर मेरी नॉलेज के अंदर होगा तो आई विल डेफिनेटली हेल्प दोस थिंग्स. ओके. चलो. ओके विनय, टुमारो लाइक टाइमिंग्स आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलते रहेंगे गाइस. ओके. मैं भी वर्किंग हूँ, सो मैं मैनेजमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ. सो लाइक टाइम मिलता ही नहीं है. लाइक अभी भी मेरा जस्ट अभी लाइक 7:30 के आसपास कॉल खत्म हुआ, 8 o'clock से सेशन स्टार्ट. सो तो लाइक आई नो सब लोग वर्किंग है, तो आप लोग थोड़ा सा दर्द समझ सकते हो. Okay, so this is what. And मुझे ये भी बताओ, like I don't keep my camera on because I just want you guys to focus on screen, and just in case कोई कैमरा में इधर उधर कुछ हो जाता है तो लोगों का ध्यान हट जाता है. So I won't be turning on my camera. Maybe if you guys want to see something like who is teaching or something, maybe we can have a small session on that. But then I'll ask everybody else to switch on their camera. Okay. Okay, just kidding. But then yeah, let me know if you guys want my face cam as well while teaching. So yeah, shall we close it? We'll catch up tomorrow, and let me see how you will teach. Sure, Venkat, you're definitely free to leave, like drop this call, and I'm just staying for some more time here. If anybody just come up with any more questions, and if no questions, we'll try to wind up it max by 9:30. Okay. Tomorrow time
Timing you will get your meeting invite max by 5 o'clock in the evening. So I guess that is fair enough, right? Or maybe we'll try to share the timings by by noon itself. But if just in case if we are occupied in some other work, we'll share you max by 5 o'clock. Hello? Yes, can you hear me? आप 5 बजे का टाइम है ना सर? नहीं, 5 बजे का टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 5 बजे तक आप टाइमिंग 8 का ही रहेगा, 8 से 10 का ही रहेगा। बट जो मीटिंग इनवाइट है वो आपको 5 बजे से पहले मिल जाएगी। आवाज क्लियर नहीं आएगी ना पहले? अरे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, मैं बोला ना ऐसे पूछ लिया करो, कोई डाउट नहीं, 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट के इशू होते रहेंगे यार, सबके साथ होंगे वो, ठीक है ना। एंड बाय द वे मेरा नाम आशीष है, तो जस्ट आप लोग लाइक सर नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, एंड सिर्फ आशीष बोलोगे तो भी चलेगा, जैसे आपकी मर्जी आप वैसे बोलो। ओके सो ठीक है, आई मीन सब लोग अभी उसी एज पे हो, तो लाइक लेट्स हैव इट more friendly. I mean, not just obviously the professional part will stay there, but then let's try to create some good connections here with each other. Like apart from with me, you guys, I would really recommend you guys, if you guys can have, like right now it is not a good time, but then down the line I will really recommend कि आप लोग आपस में भी एक अच्छा network build कर लो, so that down the line obviously सभी को help होती है. Okay. So anything else guys? Thank you for your valuable time. Thank you so much, Roshan, for joining. आप हो ना? Yes, आप हो अभी. So I guess हमने काफी queries clear कर ली, क्या क्या सीखने वाले हैं, और तो मतलब बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, नहीं करूँगा मैं, कि इससे अलावा जो हमने अभी कवर किया है, इससे अलावा हट के कुछ चाहिए तो बताओ। पावर क्वेरी है हमारी। क्या पावर क्वेरी है सर, पावर क्वेरी ऐड कॉलम टैब है, ट्रांसफॉर्मेशन टैब है हमारा उसमें सर। और अब एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी दबी सी आ रही, थोड़ा माइक के पास आके बोल सकते हो? पावर क्वेरी है, जॉइनिंग है सर, उसमें मर्ज क्वेरीज है, ऐड कॉलम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब है। हाँ सर, ट्रांसफॉर्म टैब भी, और ऐड कॉलम टैब कैसे होता है। देखो ये सब पार्ट आता है जब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपका डेटा लोडिंग की सारी टेक्निक्स कवर करूंगा, तो उसमें अब अगर आप डिटेल में सुनना चाहो तो मैं डेटा, आप किसी डेटाबेस पे कनेक्शन कैसे क्रिएट कर रहे हो। अब सिर्फ कनेक्शन ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे एंटर करो, यहाँ पे एंटर करो, आप जो वहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हो पर्टिकुलर फील्ड में, उस वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं वो भी मैं तो आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इस फील्ड में आप जो पोर्ट नंबर डाल रहे हो, पोर्ट का मतलब क्या होता है, सर्वर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर जब कनेक्शन क्रिएट करो तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कनेक्शन किस टाइप के कनेक्शन होते हैं, क्वेरी किस टाइप से एग्जीक्यूट होती है, फिर आप जब सेलेक्ट स्टेटमेंट डाल रहे हो तो स्टेटमेंट कैसे रन होगा बैक एंड पे, फिर स्टेटमेंट रन के बाद डेटा आपके पास आया, फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना, ट्रांसफॉर्म में क्या क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको मे बी उसको पाइवटिंग करना है, मे बी आपका उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़े, मे बी शायद आपको 2-3 कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम बनाना पड़ जाए, मे बी पुराने कॉलम की वैल्यू से आपको एक नया कॉलम कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है। तो जो कैलकुलेटेड कॉलम, टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, पाइवोटिंग, ऐड कॉलम, ऐड रोज, पुलिंग डेटा फ्रॉम, जो आप पावर क्वेरी बोल रहे हो, दैट इज सिंपली क्वेरिंग फ्रॉम द डेटाबेस। अब क्योंकि वो पावर बीआई में, दैट इज कॉल्ड एज पावर क्वेरी। ओके, सो नाम से पहले हम जाएंगे कॉन्सेप्ट पे, और मेरी बात मानो, अगर आप लोग मेरा टीचिंग स्टाइल फॉलो कर लो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि आप करो ही, अगर आप लोग करते हो और आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हो, सो अगर आप लोग एक टूल सीख जाते हो तो विद इन मैक्स टू मैक्स विद इन 15 डेज और 20 डेज आप लोग कोई सा भी टूल सीख सकते हो। ओके, क्योंकि इंडस्ट्री में जो टूल्स है ना, जैसे अभी किसी ने मेरे को पूछा व्हाट इज पावर बीआई, व्हाट इज टैबलू, मतलब डिफरेंस क्या है टैबलू में, एंड व्हाट इज, सो जैसे आपको मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वी हैव टाइम राइट, सो इंटरेस्टेड हो तो बताना, अगर बोरिंग लग रहा हो तो मना कर देना, आई विल स्टॉप दैट एज वेल। ओके, सो आई विल जस्ट क्विकली शो, जैसे पावर, देखो अभी आप ये जो देख रहे हो ये है टिपको स्पॉटफायर, सिमिलरली आप देखोगे तो आपके पास है पावर बीआई। ओके, सिमिलरली आप देखोगे तो आपके पास है टैबलू, ठीक है। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। हाँ मतलब आपके पास नहीं है, मैं बता देता हूँ, टैबलू, ठीक है। वैसे एक होता है आपके पास, होता है माइक्रो स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये सारे जो सारे टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, पता है ये सारे एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, डेटा पुल करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, विजुअल क्रिएट करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फंडा है।
अब आपको अगर ये पता है कि हाँ भाई मुझे डेटा पुल करना है, मुझे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे डेटा को विजुलाइज करना है और मुझे डेटा को पब्लिश करना है, मतलब वो रिपोर्ट को पब्लिश करना है। अगर इन चारों स्टेप को आप अलग अलग सेपरेटली सीख जाओ तो आप किसी भी टूल पे जंप करो, मे बी हो सकता है, देखो यहाँ पे ये बटन अलग होगा, यहाँ पे ये बटन अलग होगा, यहाँ पे बटन का नाम कुछ और होगा, बट काम तो वही होना है, क्योंकि अल्टीमेटली काम वही करना है ना, मुझे डेटा पुल करके किसी को रिपोर्ट बना के देनी है, राइट? तो हम मतलब मैं कोशिश करूंगा कि हम उस पर्सपेक्टिव से सीखें, उस थॉट प्रोसेस के साथ सीखें चीजों को, ठीक है? एंड ओके, जस्ट इन केस जितने भी लोग अभी तक हो, थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। कल के लाइक नेक्स्ट सेशन से पहले कोशिश करो, इट इज नॉट कंपलसरी, बट कोशिश करो आप लोग यहाँ पे जाओ, मे बी आप लोग चाहो तो मुझे लाइक हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन से पहले कोशिश करो कि आप लोग जो भी हैं माइक्रोसॉफ्ट MS SQL, ठीक है, इतना सर्च मारो, ठीक है? आपको एक जो पहला वेबसाइट आएगा, पहले वेबसाइट पे जाओ, ठीक है? मैं आपको चाहिए तो लिंक भी शेयर कर दूंगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है? यहाँ पे जाने के बाद आप लोग एक्सप्रेस पे क्लिक करना, ठीक है? और एक्सप्रेस पे क्लिक करने के बाद जो चीज़ डाउनलोड होगी उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और डाउनलोड करके अगर आप लोग चाहो तो इसको, हाँ मैं आपको ये लिंक ही दे देता हूँ ना चैट पे, आप लोग, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप ये मैं कह रहा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, उससे भेज दीजिए सर। या ग्रुप हम बना देंगे, लेकिन एक बार कौन कौन एनरोल कर रहा है वो तो फिक्स हो जाए ना, हाँ हाँ सर। क्योंकि फिर बाद में भी ग्रुप में फिर बाकी लोगों को निकालना अच्छा नहीं लगता, बस इतनी सी बात है यार, और कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, सो ये जो ओके वेंकट निकल गया आई गेस, तो मैं आपको ये सबको दे रहा हूँ, देखो मैंने एक लिंक दी है, इस लिंक पे जाना है आपको, बस डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करने के बाद बस नेक्स्ट 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 करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। और मोस्टली मतलब 90% चांसेस है कि सब कुछ सही से हो जाएगा, नहीं होगा तो हम देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम क्या बोलते हैं क्वेरी रन करना स्टार्ट करेंगे, और MS SQL थोड़ा सा एक वीक हम लोग SQL देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पावर BI पे जंप करेंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट वीक के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखो आप लोग, ओके? हेलो हाँ बोलो। सर, मेरे पास जो सर्वर है ना वो 2008 है सर। MS SQL सर्वर 2008 ऐसा बोल रहा हूँ? हाँ SQL सर्वर 2000, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2008। ये वन, हाँ ओके, ये SSMS बोल रहे हो आप, ये ना, ये चीज़ 2008 की है, राइट? ये चीज़ चले, कोई दिक्कत नहीं, खाली मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट, लाइक ये चीज़ मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को डेटा के बारे में थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाए, लाइक डेटा कैसे होता है, इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बस वही सब चीज़ें मेन है मेरे को सिखाना, ओके? बाकी क्वेरीज तो आप सेम लिखो, क्वेरीज आपकी जैसे आप मान लो अभी डेटाबेस है तो डेटाबेस में जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, से MS SQL है, ठीक है? MS SQL अलग है, जस्ट एक इसका ट्यूटोरियल आ गया, तो MS SQL अलग ही है, ठीक है? उसी तरह आपके पास पोस्ट होता है, PG एडमिन, ठीक है? आपके पास पोस्ट के SQL होता है, ठीक है? वैसे ही आपके पास MySQL होता है, ठीक है? इन सब का जो तरीका है ना लिखने का थोड़ा बहुत अलग रहेगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। एक लैंग्वेज सीख गए आप SQL की, तो आप किसी भी टूल पे जंप कर जाओ, आप काम कर लोगे, ठीक है? मैं बोला ना, मैं आपको वैसे सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कहीं अटक भी जाओ ना तो खुद से कैसे निकलना है, वो बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज है, ठीक है? ठीक है सर। तो अगर आपके पास है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंस्टॉल कर लो गाइस, जिसके पास भी नहीं है। एंड कोई डाउट है तो फिलहाल तो ऑर्बिट एनिमेशन वाले का जो नंबर है आप उसी पे डाउट पूछ लो, हम उसी पे रिप्लाई कर देंगे, और जस्ट एक बार आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा, सो विल हैव अ सेपरेट ग्रुप फॉर दैट, ओके? चलो ओके, सो आई गेस हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हमने वो भी डिस्कस कर लिया है, एंड आज तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है, तो 9:30 के आसपास हम सेशन क्लोज कर सकते हैं। सो जस्ट मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ गाइस, क्या क्या चीज़ें आपको आपको क्या करना है इस कोर्स के लिए। आपको हमेशा ये कोर्स लैपटॉप से अटेंड करना है, प्लीज़ 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 मोबाइल से अटेंड मत करो। एंड कभी भी अगर आप थके भी हो, कितने भी थके हो, ठीक है, चुपचाप आके ना, हाँ हाँ बोलो, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या, या मैं कंटिन्यू करूँ? हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ मेरा ऑफिस रहता है तो
मैं मेट्रो में बैठता हूँ तो सर मेरे को तो मोबाइल से अटेंड करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे फिर आप? प्रैक्टिस घर आके करूँगा ना सर, घर पे आके जूम पे। ओके ओके ठीक है। तो अगर जैसे अभी देखो, जैसे ये सब चीजें कैसे, इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हो ना आप, तो ये सब ठीक है। लेकिन जितने लोग भी लैपटॉप से या फिर पीसी से बैठ सकते हैं, पीसी या लैपटॉप पे बैठो, ठीक है। गद्दे के अंदर बैठ के लेक्चर मत लो, ओके। एंड जितना भी हम कर रहे हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा बीच बीच में टाइम देने का, तो 2-2 3-3 मिनट का। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको साइड बाय साइड करते रहो, ठीक है। और जितना भी कितना भी थके रहो, कितना भी थके रहो ऑफिस से, कभी भी ये मत सोचना कि यार मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा तो मैं उसको देख लूंगा। मैं आपको आज की डेट पे लिख के देता हूँ, जिस दिन आपने ये सोचा कि यार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर है देख लूंगा, उस दिन से आप कोर्स के पीछे रह जाओगे, ठीक है। 1.5 महीना है, 2 महीना है, ग्राइंड कर लो यार, सब लोग मिल के ग्राइंड कर लो एक साथ, ठीक है। और अकेले छूट जाओगे तो फिर धीरे धीरे मन छूट जाएगा कि यार सब लोग आगे निकल गए, या फिर नहीं समझ में आ रहा, एक दिन लेक्चर छूटेगा। देखो अभी अभी जो क्वेश्चन है बच्चों से नहीं है कि हाँ भाई हम लोग 2+2, कल भी 2+3 पढ़ेंगे, अगले दिन 2+4 पढ़ेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ने मिलेगा। पुराना दिन पहले वाला नहीं आएगा तो शायद अगले वाले दिन आप थोड़ा सा बोलते ना, सर पकड़ के बैठ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि यार आपका 4 लेक्चर छूट जाए, फिर भी आप 5वें बैठे तो पूरा अच्छे समझो। लेकिन आप खुद समझो, वो चीज़ उतनी एफिशिएंट नहीं होगी, ठीक है। तो भले ही कितना भी थके हो, अगर आपको लगता है नहीं आज बहुत थका हूं मेरे से नहीं हो पाएगा, लैपटॉप चालू करके सामने बैठ जाओ। चाहिए तो कुछ करो मत, बट सुनो पूरा, पूरा बैठे रहो, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं एटलीस्ट वो तो देखते रहो, ठीक है। 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की बात है मैक्स टू मैक्स, बस निकाल लो किसी तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आई गेस ज्यादा मोटिवेशन नहीं करेंगे, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे आप ठीक है। सो ये है पूरा लाइक ये मेरा पूरा टीचिंग स्टाइल है। मैंने शायद लाइक क्या क्या कवर कर लिया आज हमने, मैंने अपना लाइक क्या क्या चीजें सिखाएंगे वो कवर कर लिया, प्लेसमेंट के लिए कैसे असिस्ट करेंगे वो कवर कर लिया, टीचिंग स्टाइल क्या होने वाला है वो कवर कर लिया, नेक्स्ट सेशन में क्या लगेगा वो कवर कर लिया, ठीक है। इससे हटके अगर कोई डाउट है तो लास्ट चांस है, पूछ लो। 8 मिनट और है हमारे पास। और ठीक है। और अभी तक एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो आज मैं समझा रहा, मैं थोड़ा फटाफट जा रहा था क्योंकि वो सब चीज़ें हम दोबारा देखने ही वाले हैं, तो मैं लाइक ऑब्वियसली उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जो चीज़ हम करने वाले हैं ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, तो हम आगे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और स्लो चलेंगे थोड़ा सा। एंड मेरी थोड़ी सी शायद फास्ट बोलने की आदत है, तो जस्ट इन केस अगर आप लोगों को कहीं लगे कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो फट से रोक देना, ठीक है। चलो आई गेस इतना आज के लिए काफ़ी है अबाउट द कोर्स एंड अबाउट द ट्यूटर, अबाउट द टीचिंग स्टाइल। इससे हट के कुछ है तो बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर जब जैसा आप ये पावर बीआई पे कराओगे, उसके बाद सर कोई प्रोजेक्ट भी बनवाओगे ना? हाँ प्रोजेक्ट बना, देखो सर मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रोजेक्ट, मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दे, देखो 2 तरीका है, मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दे दूँ। हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर मैं, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। देखो 2 तरीके हैं, देखो सीखने के 2 तरीके हैं। मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दे दूं, ठीक है, बने बनाए प्रोजेक्ट, और मैं बोलूँ कि यार इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे फट से, क्योंकि उसके बारे में चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट दूंगा, देखो मैं ये नहीं, इसका मतलब ये मत निकालना कि मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं दूंगा, प्रोजेक्ट तो आपको मैं दूंगा, ठीक है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपको 3 प्रोजेक्ट दूं, 10 के बदले सिर्फ 3 प्रोजेक्ट दूं, और उन 3 प्रोजेक्ट पे आपको इतने सारे कंडीशंस दे दूं कि हाँ भाई इसको ऐसा करना, ऐसा नहीं वैसा करो, वो बनने के बाद नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, तो वो ज्यादा, मतलब मुझे वो सेकंड वाला अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव लगता है। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे तो 10 प्रोजेक्ट करने हैं, तो आप मुझे बोलना सर मैं आपको 10 प्रोजेक्ट दे दूंगा, ठीक है। मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट का टेंशन मतलब सर क्या करना है, अभी अभी कुछ है नहीं करने के लिए, तो बहुत सारे यूज केस मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं तो मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट दे दूंगा कि हाँ भाई ये करो, आप उसी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको उतना, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का टेंशन मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज का टेंशन मत लो,
उस चीज का तो मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ, लाइक आपको कमी नहीं पड़ेगी। हाँ भाई सर, सोचने के लिए मुझे कुछ कम पड़ रहा है। देखो आगे जाके ना, मतलब काम करने से ज्यादा सोचना, लाइक आप लोग भी, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हो वो भी मानते होंगे कि आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, अगर सही, मतलब देखो शायद किसी को बुरा ना लगे, लेकिन गधा मजदूरी कम करनी पड़ती है और सोचने वाला काम ज्यादा करना पड़ता है। मानते हो कि नहीं मानते? है ना? तो बस वही चीज, मतलब मैं कोशिश करूँ कि आपको उस सोचने वाला काम ज्यादा करना पड़े इंस्टेड ऑफ गधा मजदूरी। ठीक है ना? गधा मजदूरी तो आप जितना चाहो, मतलब अभी सही टर्म यूज करता हूँ, मतलब प्रैक्टिस तो आप, फिजिकल प्रैक्टिस या फिर वो जो बार बार रिपीटिव प्रैक्टिस है, वो तो आप जितना चाहो एक ही चीज को करते रहोगे तो भी वही बात बनेगी, 10 चीज को करोगे तो भी वही बात बनेगी। ठीक है, बट वो सोचने वाली बात है, वो आपके लिए हमेशा नया होना चाहिए। हाँ, पहले डेटाबेस कराएंगे। पहले के 3 या 4 सेशन सिर्फ डेटाबेस पे होंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं, क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे हम, और फिर उसके बाद हम चीज़ों पे क्या बोलते हैं, धीरे धीरे पावर बीआई पे जंप करेंगे। ठीक है, फिर से बोलो। सेल्स फोर्स का ओके, हाँ। सेल्स फोर्स के बहुत सारे टूल हैं। आप मतलब आप पर्टिकुलरली किस टूल के बारे में बताओ, मुझे टूल का नाम बताओ तो मैं चेक कर सकता हूँ। सेल्स फोर्स कंपनी, जैसे आप अभी ये टिपको देखा था ना, इससे पहले ये टिपको है ना, टिपको एक कंपनी है, वैसे सेल्स फोर्स कंपनी है। तो सेल्स फोर्स के बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। तो ठीक है, हम देखेंगे लाइक प्रैक्टिकल, आप जैसे जैसे आप आओगे, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उतना आपको शेयर कर सकूं। बट यार बस 2 ही चीज़ें मेरे को आपकी तरफ से ये चाहिए था कि आप लोग जब भी बैठो सिंसियरिटी के साथ बैठो और माइक ऑन करके बैठो, और जो भी चीज़ें हैं प्रैक्टिस ज़्यादा करो, बस इतना ही करो, बस इतना आप लोग करो। मैं आपको 90% गारंटी देता हूँ कि हाँ भाई, जब आपका 1.5 महीने बाद नहीं, 3 से 4 महीने में आपके हाथ में एक पावर बीआई का जॉब लग जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट के 3 मिनट बाकी हैं, अगर कुछ है तो वी कैन कंटिन्यू, और अगर कुछ और डाउट नहीं है तो फिर हम लोग 3 मिनट तो रुक ही सकते हैं। सो रोहित आई गेस आप कॉल पे नहीं। अमित आपसे बात नहीं हुई। विनय ने बात की चैट के थ्रू, शाइला ने बात की, हिमांशु ने बात की, आशीष से बात हो गई, रोशन से बात हो गई चैट के थ्रू, और D12 ये बाय डिफॉल्ट नाम आएगा आपका। चलो ठीक है गाइस, ओके एक चैट आया है, मैसेज है, पावर बीआई डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? गुड क्वेश्चन। ओके, सो पावर बीआई की स्टार्टिंग सैलरी देखो, स्टार्टिंग सैलरी से ज्यादा फोकस करो कि 2 या 3 साल बाद सैलरी कितनी है। स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड कर सकती है, 15,000 से भी शुरू कर सकते हो आप, चाहो तो 25,000 से भी शुरू करते हो, जैसा आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओ। ठीक है, हाँ हाँ सर, कम्युनिकेशन स्किल पावर बीआई में मेरी बात मानो, बहुत बहुत सही करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर बीआई जब आप देखो 2 चीज होती है, जब आप अच्छा मैं सैलरी वाला पार्ट आंसर कर दूं, फिर मैं आपको कम्युनिकेशन वाले पे आता हूँ। ठीक है, देखो सैलरी वाला पहले मैं बोलूंगा, स्टार्टिंग में आपको मे बी शायद 15-20 हज़ार का जॉब लगेगा। ठीक है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, ऐसा फ्रेशर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है तो उनका तो वो रहेगा कि वो लोग अभी किस पोजीशन पे है और कब कैसा स्विच मार रहे हैं, किस कंपनी में स्विच मार रहे हैं। ठीक है, तो उस पर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। बट जब भी आप स्टार्ट करोगे, एज्यूम करते हैं कि आपने 20,000 से शुरू किया। ठीक है, तो मे बी आपका सालाना कितना होगा, 12 2 24, दैट इज 2.4 लेवल में भी 2.5 लाख का पैकेज होगा आपका स्टार्टिंग में। ठीक है, अब 2.5 से 3 लाख का पकड़ के चलते हैं। बट यही पैकेज अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लोर करते रहोगे साइड बाय साइड, नॉट जस्ट टूल, कम्युनिकेशन पे काम करोगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपनी में थोड़ा सा एक्टिव रहोगे, चीजों को सीखोगे, तो विद इन 3 to 4 ईयर्स आपका वो पैकेज कन्वर्ट हो सकता है 2.5 से 12-15 पे। ठीक है, इतना डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा, तो देखो सैचुरेशन पॉइंट मैं बोलूंगा आपको 20 से 25 के बीच में आप शायद आगे जाके सैचुरेट भी हो जाओगे। सैचुरेट मतलब क्या है कि आप सिर्फ
उस चीज पे काम कर रहे हो जो आपको काम दिया गया है। ऑब्वियसली अगर आप जितना काम दिया गया है उससे ज्यादा की मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बढ़ते रहोगे। कमाने वाले तो लोग इसमें 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, महीने का 3-4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, बट वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम काम कितना करते हैं। Ashish, हाँ। I forgot one thing. Yes, yes. Actually, we need to learn the ETL tool for this, because one of lady is confirming me whenever you are starting the Power BI course or anything job. So we require the ETL tool knowledge. So is it required? ETL as in? Can you ETL as a ETL, extract transform load. Why do you need to learn ETL? Like, can you tell me like the reason behind that? Actually, I asked some this question to my LinkedIn friend. So she told me you need to require the knowledge about the data warehouse and the ETL tool, like as a Informatica and the some other tools. Okay, so you know what is Informatica? I know the little bit knowledge about the Informatica. Okay, no worries. So let me tell you. Did you like I don't know the meaning of ETL, but I'm still having a 5 years of experience in data like data analyst domain. Okay. So we know we are not required sometimes. No, it is not required at all to start, at least at this point. Maybe as you go down the line, maybe when this is combined with other services. Okay, so basically the Power BI, you might be getting data from Kafka, you might be getting data from maybe Azure, maybe SAP from HANA, maybe from some API. Yeah, so that time you might need to know those things, but then just from learning this Power BI tool, like as a tool or even as a service, like a service to the customer, you don't need all those things. That can be though, that can be something specific to a particular customer. Okay, but not to the tool. Okay. Power BI has its own tool, ETL tool, Power Query. Yes, so yes, exactly. Is not required. Yeah, so like the way you tell like the ETL tool. So if you will check on the market, maybe I don't know it by the ETL name, but then as you mentioned, right, what is ETL? There are other tools as well. If you see for the TIPCO, there's TDV. Similarly, you have Kafka, as I mentioned, for streaming data. Similarly, you can get the data from cloud as well. Maybe you can get the data through API from GitHub and all those kind of repositories. So like those things are separate things. So as you go to the line, go down the line, you won't be just putting data from the MS SQL or some data, maybe not from any kind of SQL. Maybe you will be pulling data from in JSON format, maybe in XML format, right? All those things also you'll be doing. CSV as well. Yeah, CSV is a very common one, but then mostly whenever you switch to API and all those things, you will be turning to JSON and XML mostly. XML also is nowadays very much like a deprecated one, but then yes, it is present somewhere. Okay, sorry to disturb you, another trouble you actually. One another question is that we require the SSRS and SSIS package for the Power BI. Power BI means Power BI job. You mean that reporting tool from the Microsoft in MSBI? This is the MSBI package. So yes. we require the SSRS and SSIS for the Power BI job. You mean the knowledge of those things, or like knowledge? No, nothing is required. So as like SSRS, right? If I'm not wrong, I'm not working on that. Right. So that is again like for the reporting in the MS SQL server, if I'm not wrong, right? Yes, right. Yeah, so that is again like that. So those technologies are still being used, but then people are jumping, like leaving those technology behind and jumping to these kind of tools. So right now in my current company, right, like the current project that I'm working for, the commercial brand, I won't take the company name, but then they are also switching from SSRS to this TIPCO Spotfire. Okay. Thank you. Yeah, sure. Any other queries, guys? We are past time, but then I can handle 1 or 2 queries more, or else we can close the session. So Ashish, like be assured, like there is nothing that I'll be hiding from you guys, that just to sell this course to you. If there is something required, I'll definitely tell you, like, okay, boss, you need to know this prior to the course. Yes. No okay. problem. No.
Chalo guys, if I think most of the queries are answered, and okay, so like think about it, and maybe by tomorrow we'll start SQL, and then obviously for 1 week we'll do SQL, and then we'll try to cover as much things in the SQL as possible, and then we'll jump to Power BI. So be ready. So we require the basic SQL knowledge, right? Yes, that I'll be providing. No worries. Okay. Okay. That's why like I have kept this 1 week of Time SQL span on course. that. Yes. Okay. Okay. So I guess that's if anybody don't have any more question, I guess we can conclude this call. Roshan, do you want to say something? Are you guys fine with your queries? Should we close this call? Yes, sure. Sure. So thank you guys, and thank you so much for your time, and thank you so much. कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हेलो, थैंक यू। आवाज क्लियर नहीं आ रही। गाइस, हाँ बोलिए, अब बोलिए। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो? हेलो। हाँ चलेगा, जरूर 8 बजे है ना सर? हाँ 8 बजे। आई एम नॉट श्योर कल होगा कि नहीं होगा, मे बी शायद वो एक दिन छोड़ के एक दिन वाला बैच है, तो मे बी शायद परसों होगा। तो जो भी रहेगा आपको लाइक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा एक। ओके, छोड़ के बैच चलेगा सर? हाँ एक दिन छोड़ के एक दिन है शायद, जितना मुझे पता है। बोल रही थी मैम 4 दिन है हफ्ते में। हाँ हफ्ते में 4 दिन, तो एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, 7 दिन। जो भी है देख लो, जो भी रहेगा आपको मैसेज आ जाएगा, उसको टेंशन मत लो। मतलब आप इस चीज का टेंशन मत लो कि इस हफ्ते में 3 दिन होगा या 4 दिन होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट होके रहेगा, ठीक है? भले ही उसका 1.5 महीने का 2 महीना हो जाए। चलो guys, thank you so much for your time, and thank you so much for listening to my bug थोड़ी सी, and let's meet for the next class with full enthusiasm, and I hope आप लोग focused रहोगे learning के लिए. So thank you so much again, and let's end the call. Thanks, Ashish. Bye. Yeah, take care guys.